हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन और फिर हम इसी से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स प्रैक्टिस करेंगे जो हमारी न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हेल्प करेंगे एंड देन वील डिस्कस मोशन अंडर ग्रेविटी। सो लेट्स स्टार्ट विद इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट, we know v is equal to u plus at. Second, s is equal to ut plus half at square. Third, v square is equal to u square plus 2as. Now I hope कि ये जो तीन बेसिक हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो आप लोगों को पता होंगे, बिकॉज ये हमें बहुत बेसिक लेवल, बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ाए जाते थे। बट जो हमारे लिए डिफरेंट है, जो हमारे लिए एक नया इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। लेट मी राइट दैट, displacement in nth second, that is equal to u plus a upon 2 2n minus 1. This is new. This is a different equation of motion for us, that displacement of any particle or body, anything, displacement in nth second is equal to u plus a upon 2 2n minus 1. But ये जो हमारी सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जो हमारे चारों इक्वेशंस हैं, दे ऑल हैव टू कंडीशंस. कंडीशन नंबर 1, दे आर वैलिड ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन. कंडीशन नंबर 2, they are valid only when acceleration is constant. दो कंडीशंस हैं जिसपे ये इक्वेशंस ऑफ मोशन डिपेंड करते हैं. द फर्स्ट इज दे आर ओनली वैलिड फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन. अगर रोटेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, कोई भी मोशन है, देन ये इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं है. ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है. एंड द सेकंड, दे आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. जब भी एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा तभी हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं. अगर हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल है, अगर ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ या किसी भी रिस्पेक्ट में, अगर ये हमारा एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, then हम अगेन इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं. Now the question is, what if acceleration is constant? अगर acceleration constant नहीं है तो हम ये यूज नहीं कर सकते. But what if acceleration is not constant? अगर acceleration constant नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो हम यूज नहीं कर सकते हैं. So then comes in calculus. जब भी हमारा acceleration constant नहीं होगा, हमें कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए. ये चारों फॉर्मूलाज काम नहीं करेंगे इन दैट कंडीशन. नाउ एक बहुत बेसिक चीज जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे थ्योरी में भी है और हमारा न्यूमेरिकल पार्ट को भी अफेक्ट हमारी कर सकती है, दैट इज difference between n second and nth second. n second and nth second में क्या डिफरेंस है? लेट मी एक्सप्लेन. लेट्स से हमारे पास 4 सेकेंड्स है, ये 4 सेकेंड, एक टाइम पीरियड है हमारे पास 4 सेकेंड. सो इस 4 सेकेंड हमारे पास एक तरफ है और nth सेकेंड हमारे पास ये 4th सेकेंड है. सो क्या डिफरेंस है दोनों में? इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि एक बेसिक मिसकंसेप्शन है जो कि अक्सर लोग गलती करते हैं. 4 सेकेंड एंड 4th सेकेंड, क्या बेसिक डिफरेंस है? ये जो हमारा 4 सेकेंड्स है, दैट मींस ये टोटल हमारा ये टाइम पीरियड है, दैट मींस फ्रॉम 0 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स. 4 सेकेंड्स का ये मतलब होता है
शुरू से लेके उस सेकंड तक, हियर वी हैव 4, तो 0 से लेके 4th सेकंड तक जो टोटल हमारा टाइम पीरियड है दैट इज 4 सेकेंड्स, 0 to 4, टोटल 4 सेकेंड्स है हमारे पास। बट इन दिस केस 4th सेकेंड पर्टिकुलरली इंडिविजुअली सिर्फ हमसे 4th सेकेंड पूछा जा रहा है, टोटल टाइम पीरियड हमसे नहीं पूछा जा रहा है। So what does this mean? This means third second, sorry, this means third second to 4th second। ये 0 से 4 नहीं होगा, ये इंटायर टाइम पीरियड नहीं है, ये सिर्फ 4th सेकेंड का है। दैट मीन्स 3rd से 4th जाने में कितना टाइम लगा। सो इधर जो हमारा टोटल टाइम लैप्स है दैट इज ओनली 1 सेकेंड। ये हमारे 0 से 4 सेकेंड, और ये 4th सेकेंड में सिर्फ 3 से 4, दैट इज टोटल टाइम लैप्स, दैट इज 1 सेकेंड। सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। नाउ let's take a question based on equations of motion. We'll take a very good question. So this is a question. The question says a car can be stopped in a minimum distance of x meter by applying brakes if the initial speed of car 2 was n times car 1. So this line is important. If the initial speed of car 2 was n times car 1. So इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि हमें दो कार्स को कंपेयर करना है। ऊपर वाले लाइन से हमें लग रहा है एक ही कार है which can be stopped in a minimum distance of x meters. But this line states that we have to compare two cars. Then find minimum stopping distance of the car. So we have two cars. ये कार का इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, सेम या इनिशियल एंड फाइनल। सो इधर हमारा ये कार u वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, लेट्स अज्यूम इनिशियल स्पीड ऑफ कार 2 वाज n टाइम्स कार 1। सो कार 1 के इनिशियल स्पीड हमने u माना है, सो ऑब्वियसली कार 2 का जो इनिशियल स्पीड होगा दैट विल बी n टाइम्स u, दैट विल बी n मल्टीप्लाइड बाय u। हम इधर कुछ भी मान सकते हैं, हमने u माना है तो इधर वी हैव मल्टीप्लाइड n विद u। और इधर इस कार में ब्रेक्स अप्लाई होते हैं एंड द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज x मीटर आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। सो कैन वी से ये जो डिस्टेंस वो गाड़ी कवर कर रही है, जो कार ये डिस्टेंस कवर कर रही है ब्रेक मारने के बाद अपने फाइनल पोजीशन पे आने के लिए, दैट इज एट रेस्ट। सो कैन वी से दिस इज व्हाट इज x मीटर? यस। Similarly, इधर भी this is what is x meter. Let's take it x dash because ऊपर भी हमने x ही माना है, and this is the final position. That means v is equal to 0. V is equal to 0. We are given assume constant retardation. अब retardation किधर लगेगा, क्यों लगेगा? See, इधर ये हमारी कार है, आफ्टर क्रॉसिंग पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पे आने के बाद ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं जिसके बाद ये फाइनली रेस्ट पे आता है। सो जब कार पे ब्रेक्स अप्लाई हो रहे थे, कार की वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज हो रही होगी, दैट मींस पीछे की तरफ एक रिटार्डेशन होगा जो उस कार को रोक रहा होगा। सो वी हैव अ कांस्टेंट रिटार्डेशन बैकवर्ड्स, और बैकवर्ड्स इसलिए क्योंकि हम आगे के डिस्टेंस को इधर पॉजिटिव मानेंगे और पीछे के डिस्टेंस को हम नेगेटिव मानेंगे। हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट इज मोर एप्रोप्रिएट। हम आगे के डिस्टेंस को पॉजिटिव मानेंगे और पीछे के डिस्टेंस को नेगेटिव मानेंगे। सो अब हमारे दोनों कार्स के लिए हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन पुट करने हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों कार्स के लिए पुट कर देना है। ये हमारा हो गया फॉर कार 1 और ये हमारा हो गया फॉर कार 2। सो हम देख सकते हैं जब कार रेस्ट में आ रही है
v इसका 0 है, so there's nothing to debate on that. v square is 0, v square is 0, u square. अब इधर u तो एक वेरिएबल है, u मींस इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी. सो कार 1 की इनिशियल वेलोसिटी हमने u ही एज्यूम की है, सो हम इसे लिख देंगे एज इट इज u स्क्वायर प्लस 2as. अब इधर हम a नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो रिटार्डेशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, और बैकवर्ड डायरेक्शन को इधर हमने नेगेटिव माना है. सो दिस विल बी माइनस a एंड दिस विल बी s दैट वी डोंट नो. इधर 0 is equal to u square. u वेरिएबल है, दैट मीन्स इनिशियल स्पीड, और इधर हमने इनिशियल स्पीड जो माना है दैट इज n टाइम्स ऑफ u, दैट इज n u का होल स्क्वायर एंड नॉट u का होल स्क्वायर. दिस इज द पॉइंट जहां पे लोग गलती करते हैं. ये u स्क्वायर नहीं होगा, दिस इज n टाइम्स u, सो ये n u का स्क्वायर होगा, एंड ये 2as एज इट इज, 2a यहां भी नेगेटिव है एंड s. सो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हम लिख सकते हैं, वो वैसे भी कैंसल आउट होगा. एंड ये जो हमारा s है, ये जो हमारा s है, ये पूरा डिस्टेंस नहीं है. गाड़ी ने कहां से स्टार्ट किया और कहां पे एंड किया, ये पूरा डिस्टेंस नहीं है. s दिस इज नॉट द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट. ये x खाली उतना डिस्टेंस है जितना ये कार ब्रेक मारने के बाद मूव कर रही है फॉर कमिंग टू द फाइनल पोजीशन, दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट. A car can be stopped in a minimum distance of x meter. मतलब ब्रेक मारने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x. सो इधर भी हम x, s की जगह पे x लेंगे, x. सो दिस विल बी 2a x. इधर we have n square u square is equal to 2ax. ये दोनों इधर नेगेटिव और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, सो दैट विल बी पॉजिटिव. सो अब ये हमारे पास n स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax. अब इधर हमारे पास u स्क्वायर का वैल्यू है, बस हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, वी विल हैव द आंसर. सो वी हैव n स्क्वायर u स्क्वायर दैट इज 2ax, और ये हमारा x डैश, आई एम सॉरी, is equal to 2a x dash. Up 2a we can cancel out, so we are left with n square times of x is equal to x dash. So this is the relation between the minimum stopping distance of both the cars. n square times of x means car 1 का जो stopping distance है, that distance multiplied by जो उसका initial speed है उसका स्क्वायर. दिस n मतलब जो कार 2 का कार 1 से ज्यादा है, दैट इज n, दैट इज डेल्टा v. जो कार n की वेलोसिटी कार 1 के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, दैट मल्टीप्लाइड बाय द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस x, एंड दैट विल बी इक्वल टू x डैश, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार 2. सो आई होप दिस इज क्लियर. Now, as I told in the last video, हम कुछ ट्रिक्स प्रैक्टिस करेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत बेनिफिशियल होंगे. So you can call this concepts, tricks or theorems, whatever you wish to, you can call it. First, our first trick is when body accelerates for t1 time and decelerates for t2 time.
ये हमारा पहली ट्रिक है. When body accelerates for t1 time and decelerates for t2 time. What is the relation? We have a1 t1 is equal to a2 t2 and that is equal to Vmax. Now what is A? Acceleration. What is T? Time. What is Vmax? The maximum velocity achieved by the body. We can prove it also. There are many tricks we can prove, but I don't think there is any need to prove. You can just memorize this and it will do. When displacement of body is S1 for time t1 while accelerating and S2 for time t2 when decelerating. एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट S1 है फॉर टाइम t1 while accelerating and S2 for time t2 while decelerating. So क्या रिलेशन है? We have S1 is equal to half a1 t1 का स्क्वायर and similarly we have S2 that will be equal to half a2 t2 का स्क्वायर. And the third and the last trick for this unit, when a body at rest, accelerates for S1 displacement and decelerates for S2 displacement. What is the relation in this case? We have A1 S1 will be equal to A2 S2. A here is the acceleration, S is the displacement obviously, and ये जो हमारे S1 and S2 है, that also has some value, that is Vmax का square upon 2A1, and similarly for S2 we have Vmax square upon 2A2. These are the derived values for S1 and S2, but we do not have any need to derive it, only memorizing will do. Now let's take a beautiful question that will solve all your doubts as to how, when and where are these tricks or concepts, whatever you call it, used in numericals. So let's take a question. So this is our question. The question says, a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest. If total time lapse is t seconds, evaluate the maximum velocity reached by the car and the average velocity of the car. So this is the rough diagram. So the first information, a car accelerates from rest. That means initial speed जो हमारा होगा, initial velocity will be 0 and decelerates at a constant rate to come to rest. So finally भी ये body rest पे आता है, that means हमारा v भी 0 होगा और u भी 0 होगा. And the third information, the total time lapse is t seconds. Means इस कार का यहाँ से लेके, that is the initial position, till here, that is the final position, the total time taken is t seconds. And the next information, a car accelerates at a constant rate alpha. So जाहिर सी बात है, till here the car is accelerating और ये एक braking distance है, after which the car finally comes to a halt.
So ये जो हमारा पार्ट है that is alpha, because इस पार्ट में तो ये कार एक्सेलरेट कर रही है, that's for sure, and it decelerates at a constant rate beta. So ये जो हमारा ब्रेकिंग पार्ट है, आफ्टर दैट जब वो कार फाइनली एक हॉल्ट पे आ रही होती है, that is what is beta. That's also obvious. So अब what is the individual time taken by this alpha and beta? इन दोनों का अपना अपना टाइम क्या है? That is the time taken by acceleration and time taken by deceleration. So हमें पता है हमारे पास टोटल टाइम t है. So let's say ये जो हमारा अल्फा था उसने t1 टाइम लिया. जो एक्सेलरेशन हो रहा है, जब कार एक्सेलरेट कर रही है उसे t1 टाइम लगता है. हमारे पास t टाइम था, हमने t1 टाइम यूज किया एक्सेलरेशन के लिए. सो अब जो डिसेलरेट कर रहा है तब हमारे पास क्या टाइम होगा? हम इसे t2 नहीं लेंगे. द टाइम फॉर डिसेलरेशन विल बी t माइनस t1. एक बेसिक सी बात है, अगर हमारे पास टोटल टाइम 10 है और हमने एक्सेलरेशन में 7 यूज कर लिया, हमारे पास डिसेलरेशन के लिए कितना टाइम बचा है? 3 मिनट्स. सो दैट्स व्हाट वी हैव डन. टोटल टाइम माइनस जितना हमने एक्सेलरेशन में यूज कर लिया, that much is left for deceleration. So now we have one relation, alpha t1 and beta t minus t1. So let's write alpha t1 is equal to beta t minus t1. Let's open the bracket. Alpha t1 is equal to beta t minus beta t1. Now what we can do is, let's take t1 common. Alpha t1, first we'll shift this beta t1 here, plus beta t1 is equal to beta t. We'll take t1 common from here. Alpha plus beta is equal to beta t. Now, what will be the value of t1 in this case? t1 will be equal to beta t upon alpha plus beta. Am I clear? Alpha t1 था हमारे पास और beta t minus t1 था. हमने इस beta t और beta t minus 1 को ब्रैकेट ओपन किया, so we got this value. और ये जो हमारा t1 था उसे हमने इधर LHS पे शिफ्ट किया और bt को RHS में एज इट इज हमने रहने दिया. सो t1 हमने कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विद अल्फा एंड बीटा, और ये हमारा bt. सो फाइनली t1 विल बी bt डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा. नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर विदाउट नोइंग द ट्रिक्स. सो हियर वी विल यूज द ट्रिक दैट a1 t1 is equal to a2 t2 and that is equal to Vmax. I am not saying that we can not solve this question without using this trick, but it will be very difficult and very lengthy. And on the other hand, if we use this trick, that is the very small trick, a1 t1 is equal to a2 t2 and both are equal to Vmax. This trick will fetch us a one-line answer for the entire dangerous looking question. We'll just substitute the values of a and t and we'll get Vmax that we are required to find in the first subpart. Now we can either take a1 t1 is equal to Vmax or a2 t2 is equal to Vmax. Both are ultimately equal to Vmax. So here we'll take a1 t1. अब हमारा a1 और a2 क्या है? a1 a2 लेने से काम नहीं चलेगा. We have to substitute the values. We know a1 is obviously the time of acceleration, while the time of acceleration, that is alpha, and a2 t2 is while the time of deceleration, and that is this beta. So we have a1 beta, a2 beta, and here we are taking a1 t1 is equal to Vmax. a1 we have alpha and t1 we have just found out the value, that is beta t
upon alpha plus beta, and that is equal to Vmax, and this answers our first subpart. Maximum velocity reached by the car, and the answer is alpha beta t upon alpha plus beta. Now let's talk about the next subpart, that is the average velocity of the car. Now we all know average velocity, that is total distance upon total time. अब हमें पता है जो entire journey है that is covered in two parts. एक halt के पहले before applying the brakes, and एक when the body is finally coming to rest. So we can take this as S and take this as S2. Let's take this as S1. So it is S1 plus S2 upon total time. It's given total time lapse is t seconds. Now how can we solve it further? S1 plus S2 upon t. We have no values for S and t. Now remember in the tricks, I told you one thing about the values of S1 and S2. These are derived values, and I told you no need to derive that. We can just memorize it and that will do. So the values for S1 was Vmax square upon 2A1, and S2 we had Vmax square upon 2A2, and again we will not take here A1 and A2, we will take alpha and beta. So we are left with Vmax square upon 2 alpha, Vmax square upon 2 beta, and this entire will be divided by t. So now this is our equation. So what we will do is just take Vmax square common, and 1 upon 2 alpha plus 1 upon 2 beta, and we'll ignore this t for a while. We'll just divide this t when we get the final answer, because if we keep this t, the equation will become difficult for us. Now Vmax square. Now we have just taken out the value of Vmax, that is the first part, maximum velocity reached by the car. We just have to substitute, and we have got almost the 90% of the question. The value of Vmax was alpha beta t upon alpha plus beta, iska whole square, because this is Vmax square, and this will be 1 upon alpha plus 1 upon beta. We have taken 2 common and we have multiplied it over here. Multiplication hai, whether we do it here or here doesn't matter. So we'll just open the brackets here and square it over here. Here we have alpha square, beta square, t square upon 2 alpha plus beta whole square. Let's not open this, because this will directly eliminate this. Multiplied by, we'll take the LCM over here. That is alpha beta upon numerator, we'll have alpha plus beta. So you can see this alpha plus beta is cancelled, and this 1 alpha, 1 beta. So here we are left with alpha beta t square upon 2, and either we have 1 alpha plus beta still, because this was alpha plus beta square. 2 alpha plus beta, and the final step, I told you we are ignoring t over here, but in the final step we have to divide it by t, total distance upon total time. So this t will eliminate one of these t's, and the final answer for the average velocity will be alpha beta t upon 2 alpha plus beta. So this is our final answer. This is the average velocity of the car, alpha beta t upon 2 alpha plus beta. So that's all for today. I hope you like the video. अगले वीडियो में हम मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू करेंगे, and we'll talk about moving frame.
let me just explain what a moving frame means. Let's say we have one hot air balloon. Let's say this is our hot air balloon. We have a person over here, and this is, let's say, at a height. Let's say this is at a height h from the ground, and the person in this balloon drops a ball. Drops a ball from there. So ये जो बॉल है जिसे एक हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, दिस एयर बैलून मस्ट बी हैविंग अ वेलोसिटी जिससे ये ऊपर जा रहा है. सो बेसिक जो प्रिंसिपल है मूविंग फ्रेम का, दैट इज जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है उसके पास इस पूरे सिस्टम का वेलोसिटी होगा. दैट इज जब एक हाइट पे जाने के बाद ये इस बॉल को ड्रॉप कर रहा है, तो इस बॉल के बाद इस बैलून का जो पूरे हॉट एयर बैलून सिस्टम का जो वेलोसिटी है जिससे वो ऊपर जा रहा है, उसी वेलोसिटी से ये बॉल नीचे आएगा. एंड हम फर्दर कैलकुलेशंस भी करेंगे. बॉल कितनी देर में नीचे आएगा, दैट इज टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड. मिड पॉइंट पे बॉल की क्या वेलोसिटी होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की क्या वेलोसिटी होगी, और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस इस मूविंग फ्रेम पे बेस हम करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.